Good morning everyone. Class 11 subject accountancy unit number 1 हमारी फिनिश हो गई. Today discussing whole unit of revision. So first topic is what is accounting. Under this concept we are recording the transaction, identifying the transaction in financial nature amongst the various transaction. First, identifying the transaction of financial nature amongst various transaction. Okay. Second, measuring the identified transaction in terms of money. Clear? तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको मेजर कर रहे हैं, आफ्टर दैट उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग डिवीजन चल रहा है हमारा यूनिट 1 का. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज accounting is an art as well as science. मीन्स क्या है, ये एक प्रोसेस है, कला है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की. एंड साइंस मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच के बेसिस पे हमने क्या किया, प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शंस डिजर्व करते हैं रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके. सो फर्स्ट, accounting is an art as well as science. Clear? Second, recording of financial transaction only. क्या किया हमने? First, identifying the transaction of financial nature. First step क्या था हमारा? Identifying the transaction of financial nature amongst various transaction. Clear? So second, measuring the transaction in terms of money means financial transaction है या नहीं. आपने बोल दिया ये गुड्स क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री है. क्लियर? बट आपने ये नहीं बताया कि ये गुड्स कितने का है. तो उस केस में बेटा आप उस गुड्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली मेजरमेंट के लिए ओके नहीं है. ओके. सो नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. क्या करना, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इन टर्म्स ऑफ मनी में. क्लियर? और क्या करेंगे आफ्टर दैट, क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी बुक में जाएगा. जनरल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक मीन्स परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. तो देयर आर many number of books. So classify the transaction, after that posted a transfer to certain transaction in this specific book. Okay. So last, समराइज, समरी बना ली, उस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड कर लिया, मेजरमेंट कर लिया. क्लियर? अगर हमें कल को उसको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, नॉर्मली हमें रिकॉर्ड चेक करने, आपके पास सपोज कीजिए 10 डेटर्स हैं. कितने? 10 डेटर्स. ठीक है. आपने रैंडमली किसी भी पेज पे क्या किया, विजिट किया, फाइंड किया कि उस डेटर का फाइनल बैलेंस इतना है, हमें इतना पेमेंट उससे कलेक्ट करना है. तो क्या हो गया, वो समरी मेंटेन कर रहे हो आप उस टोटल रिकॉर्ड की. ओके. सो बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. ओके. Second, recording of financial
transaction only. Any other transactions are not recorded in accounting because those transactions are not measured in terms of money. Recording in terms of money, classifying and summarizing. Okay? So characteristics of accounting. Next step, objectives of accounting. क्या क्या objectives हो सकते हैं आपके accounting के? तो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव किया टू कीप systematic record of business transaction. To keep a systematic record of business transaction. क्या किया आप लोगों ने? अपने business transactions हैं उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया है. क्लियर? फर्स्ट हमने क्या किया था? उनको आइडेंटिफाई किया था among the various transaction. After that मेजरमेंट किया था in terms of money. Okay? And third is recording the transaction. Clear? So first point is to keep systematic record of business transaction. हमें क्या करना? सिस्टमैटिकली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेंटेन करने इन प्रॉपर वे. ओके? सो पॉइंट सेकंड, to calculate profit or loss. To calculate profit or loss. Identify the profit or loss regarding certain transaction during the financial year. Okay? So next, to know the exact reason leading to net profit or loss. Under this point, we are finding that the exact reason of profit in this approach, different types of transactions are identified. Suppose during the year sales, during the year's collection from debtors, during the year payments to creditors. So different types of transactions are identified and find the exact reason of profit and fluctuation of profit. Clear? To ascertain financial position of the business on the basis of financial statement. On the basis of financial statement, we are identifying the position of business and prepare at the end of financial year trading account. It helpful in calculating gross profit. Clear? It include opening stock, purchases, purchase return, sales return, closing stock and direct expenses. Clear? With the help of trading account, we calculate a gross profit. Second, profit and loss account. Profit and loss account include a business expenses daily routine, and it is also helpful in calculating. It is also helpful in calculating net profit oblique net loss during the financial year. And balance sheet. Balance sheet, it represents a true and fair concept of business या financial position. क्या represent कर रही है? Balance sheet. Because on the basis of balance sheet, any investor oblique third party as shareholder invest in this company, and he also checked the EPS earning per share, PE price earning ratio, RSI relative share index. So on the basis of these points, investor invest in company, and financial statement include a trading account, profit and loss account and balance sheet. Clear?
this point, we are comparing the financial statement to year by year. Suppose that in 2017, a company earned a profit rupees 50 crore. Clear? And 2018, company earned a profit 45 crore. And again, 2019, at the end of financial year, company earned a profit 40 crore. But in this situation, profit is change or fluctuate year by year. Okay? So, company appoint an auditor and identify the certain regions in profit in the books of account. Okay? So next point is to prevent and detect error and fraud. And under this point, auditor is also helpful at this level because he apply the cross technique. Suppose that he asks a debtor list from cashier and verify the receiving amount from vouchers and banking transactions. क्या हो रहा है? ऑडिटर ने क्या किया? कैशियर से डेटर्स की लिस्ट कलेक्ट की. ओके, एंड दिस लिस्ट क्रॉस वेरीफाई banking transaction and certain balances and vouchers. So it is also helpful to prevent and detect error and frauds. Okay? So objective of accounting: first, to keep systematic record of business transaction. This approach is also helpful in maintaining the certain transaction in a books of account. Okay. Second, to calculate profit or loss by the way of financial statement, trading, P&L and balance sheet. Third, to know the exact reason leading to profit oblique net profit oblique net loss या loss. Clear? आइडेंटिफाई किया जाएगा certain regions को जो क्या हो रहा है बिजनेस में लॉस हो रहा है उस regions को आइडेंटिफाई किया जाएगा प्लस प्रीवियस ईयर के डेटा से उसको कंपेयर किया जाएगा कि जो प्रॉफिट है कितना परसेंट फ्लक्चुएट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट में या डाउनवर्ड मूवमेंट में. क्लियर? अगर अपवर्ड मूवमेंट में होता है तो बेटर, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा है तो सर्टेनली क्या करेंगे, फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस का क्रॉस वेरीफाई करेंगे. ऐसा तो नहीं कि कैशियर ने अपनी पॉकेट में पैसा रख लिया अपने बैंक अकाउंट में, डायरेक्टली रिसीव किया वो डेटर से. क्लियर? सो टू ascertain financial position of the business by the way of financial statement. On the basis of financial statement, investor invest in a company. Again, to ascertain progress of business year to year या year by year, क्या करते हैं हम? लास्ट 4 years के डाटा अपने टेबल पे मंगवाए, 1 by 1 उनको कंपेयरली चेक किया एंड फ्लक्चुएशन को नोट किया, फ्लक्चुएशंस के रीजन्स को आइडेंटिफाई किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रीजन्स हैं उनको नोट किया. क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है, जब आपने प्रॉपर वे में अकाउंटिंग की है तो जिस पर्पज से आपने अकाउंटिंग की वो पर्पज आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. जो ऑब्जेक्टिव था आपका बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, वो ऑब्जेक्टिव आपका या आपका गोल वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा. क्लियर? एंड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, इस
फ्रॉड्स या एरर्स को एट द लेवल डिटेक्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट discussing characteristics of accounting, again objective of accounting, and next function of accounting. Function of accounting: maintain complete systematic record. Under this point क्या कर रहे हैं हम? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर वे में ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं. कोई ट्रांजेक्शन छूट ना जाए गलती से, या ओमिटेड ना हो जाए, या डबल एस्पेक्ट में ही उसको लिखना भूल ना जाए. तो इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है? कैशियर को बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर ट्रांजेक्शंस करने होते हैं डे बाय डे, या वो DCR मेंटेन करता है, डेली कलेक्शन रिपोर्ट. ओके, सो मेंटेन कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. Next, communicating financial result to various parties. At the end of financial year, financial statement disclose the business position. Okay? So, on the basis of this result, various parties identify the position of this company in a market. If a company listed in stock exchange, okay, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange, and both stock exchange are regulated by SEBI, Security Exchange Board of India. Like as RBI control all banks, commercial, non-commercial, scheduled, non-scheduled bank. Okay, so investors, creditors, governments, bankers, financial institutions, underwriters, all these parties are an external user of the accounting information. Next, protect the asset of business. By the way of accounting, we use different types of techniques regarding depreciation technique. This technique is helpful in creating a fund, because under this approach we are charging depreciation on certain assets year by year, and it maintains the funds regarding of these assets. So protecting the assets of business in this manner, or repair and maintenance purpose. सडनली मान लीजिए मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया है, पावर फेलियर हो गया है, उससे इमीडिएटली क्या शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सीडेंट हो गया है, तो उससे कहीं ना कहीं मशीनरी हार्मफुल हो गई है, इंजर्ड हो गई है, या उसको डैमेज हो गया है, तो उसका भी मेंटेन करते हैं. और उसके रिगार्डिंग जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं. ओके, नेक्स्ट, providing assistance to management time to time financial information regarding business transaction given by the specific authority to our management. Next, compliance of legal needs. In today's scenario, GST Act, goods and service tax. It includes the all type of taxes: central tax, value added tax, sales tax. Clear? So GST include a different type of taxes. And second is income tax. Next, fixing responsibility. Under this point, under this approach, a specific authority fix a responsibility to another person regarding a business transaction. Suppose करिए कैश डिपार्टमेंट में 3 वर्कर्स हैं, 3 एम्प्लॉइज इंगेज हैं. क्लियर?
एक है हेड कैशियर, एक है पेटी कैशियर, और एक पर्सन है जो कैश के ट्रांजेक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। तो तीनों पर्सन की ड्यूटी बनती है कि एट द एंड ऑफ डे वो क्या करें, कैश को मैच करें। अगर कहीं फ्लक्चुएशन आ रहा है तो उसके लिए रीजन को आइडेंटिफाई करें और कैश को मैच करने के बाद ही टुडे की जो ट्रांजैक्शंस है उनकी डीलिंग को शट डाउन करें। ओके, क्लियर? सो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट मेंटेन कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट communicating the financial result to various parties, protecting the assets of business, provide financial assistance, providing information to management, compliance of legal needs and fixing responsibility. Next, users of accounting information. Users of accounting information या parties interested in accounting information according to their needs. So two types of users. First, internal users, okay, and other is external users. Internal users, it include a owner and management oblique internal worker oblique employee. So first is owner. जो ओनर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनीज के, जो मैनेजमेंट ट्रस्टी है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, क्लियर? एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजिंग कमेटी डिजाइन की है, नंबर ऑफ पर्सन इसमें इंक्लूड है जो डिसीजन ले रहे हैं, क्लियर? इंटरनल यूजर हो गए एंड एक्सटर्नल यूजर। इसमें क्या है? पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है? हु इन्वेस्ट इन अ कंपनी। नेक्स्ट, क्रेडिटर मीन्स सप्लायर, आउटसाइडर्स जिनको आपने फर्दर पेमेंट करना है, ओके? एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज या सब्सिडरीज कंपनी गवर्नमेंट की, एंड कॉम्पिटिटर। तो डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट पर्सन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेसिस पर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये डिसीजन लेते हैं। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके आप देख रहे होंगे पूरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन या बैंक मैंडेटरी हो गए कि उनको अपनी रिपोर्ट्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली डिस्क्लोज करनी है इन नेशनल न्यूज़पेपर एंड वेब पोर्टल ऑन कंपनी वेबसाइट। और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एक्सटर्नल यूजर्स बिकॉज all external investor invest in a company on the behalf of financial report, okay? Next, types of accounting या subfields of accounting. First, financial accounting. Financial accounting. Financial accounting represent a financial statement of a company during a financial year. It includes a trading account, profit and loss account, and balance sheet. Okay? Or financial accounting represent financial statement at the end of financial year. Okay, और फाइनेंशियल ईयर will start April to 31st March
So second is cost accounting. Under this approach, in manufacturing concern oblique production concern, company calculate a product cost per unit and total cost. Company calculate a product cost as a per unit and total cost in a cost accounting. And in manufacturing concern, ICWA appoint in this organization Indian Cost and Worker Account. Okay, and financial accounting, financial statement audited by chartered accountant, CA. Okay, third, management accounting. It include different types of accounting: ratio analysis, budgetary control system, standard costings, fund flow statements, cash flow statements. Ratio, it include also different types of ratio: liquidity ratio, profitability ratio, solvency ratio, ROI ratio, budgetary control, flexible budget, production budget, purchase budget, sales budget. Okay, and fund flow statement. It also explain uses oblique application of fund, and source of fund. Okay, so three types of accounting, oblique subfields of accounting. Basically, first, financial accounting; second, cost accounting; third, management accounting; next, fourth, tax accounting. It includes income tax and GST principles and rules and regulation. Last, social responsibility accounting. Social, SRA, social responsibility accounting. Under this approach क्या हो रहा है? आपने नोटिस किया होगा जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो सेस लगता है, एजुकेशन सेस चार्ज होता है ना। तो एजुकेशन सेस इसलिए चार्ज हो रहा है, जो उससे फंड कलेक्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? एजुकेशन वेलफेयर में जा रहा है, चिल्ड्रन वेलफेयर में जा रहा है। कलेक्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन करें इन अ पॉजिटिव मैनर. ओके, सो characteristics of accounting. First, accounting is an art as well as science. Second, recording of financial transaction. Third, recording in terms of money. Fourth, classifying the transaction and posted and transfer in a specific book. And last is summarizing, summary, transactions की summary detail बनाना. Last, next, objective of accounting: to keep systematic record of business transaction, to calculate profit or loss, to know the exact reason leading to net profit or loss. क्या करना है आपको? exact reason find out करना है. प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट का, लॉस हो रहा है तो लॉस, उस केस में आपको रीजंस आइडेंटिफाई करने प्लस फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहा है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. ओके, टू ascertain financial position of the business. Next, to ascertain the progress of business year by year. To prevent and detect error and fraud. Okay, so objective of accounting. Next, function of accounting: maintain complete systematic records. Okay,
communicating the financial result to various parties, communicating the financial results to various parties. Okay. Next, protecting the assets of business, different types of assets, plant, machinery, equipment, stocks, building, furniture, land, compliance of legal needs, GST and income tax, fixing responsibility of specific authority, and last is user of accounting information या इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी हो सकती है, एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं, इंटरनल यूजर हो सकता है. क्लियर. इंटरनल यूजर में मेनली एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स, मैनेजमेंट ट्रस्टी, मैनेजिंग कमेटी. क्लियर. एंड एक्सटर्नल में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड एजेंसीज and competitors. Okay. So next is types of accounting. First, financial accounting. It is helpful in preparing a financial statement at the end of financial year. Next, cost accounting. By the way of this approach, we are calculating product cost per unit and total cost. Management accounting, it also includes different type of approach: ratio analysis, redress analysis, standard costing analysis, fund flow analysis, cash flow analysis. Okay. Last, tax accounting. It also includes GST principles, income tax principles, and its working style. And last is social responsibility accounting. It also works for society welfare and charge different types of taxes by the way of government, like as education cess.